Hello, hi, good evening. How are you? Good I can evening. see kids as well. Hello, how are you? Yeah, good, ma'am. Good Great evening, to ma'am. Good evening, ma'am. We'll start the session in just 5 minutes. Okay, we'll wait for a few more participants to join. Okay, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, बच्चों को फ्रूट का जूस दे सकते हैं? Hello, hi. हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन बाद में रखेंगे. Okay, first I will brief all the nutrients जो बच्चे के लिए चाहिए and will topic with the cover the topic and everything, and then I will take the question answer things. ओके मैम. Yeah. Hello, hi. So let's start with the session today. Good evening. Hello, kids, and hello, parents. How are you? How are you doing? All good? So everyone knows why are we here today? To understand जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वाला है कि नहीं है, या फिर हम क्या बेटर कर सकते हैं अपने डाइट में to make it a complete balanced meal. Okay. Starting with the session, just giving my introduction. I'm Chaitali Bharatia, clinical dietitian, masters in diabetes and cardiac nutrition. I'm certified diabetes educator as well and certified in functional foods and nutraceutical. Today we will be taking a topic how to take a balanced meal for the kids. Lot of parents come to me and ask कि हम बच्चे को complete balanced meal कैसे दें. And usually mother की ये complaint रहती है कि हम बच्चे को actually क्या दें, because they are very fuzzy eaters. वो कभी choosy है, कभी ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हमें इस तरीके से बनाओ. Okay, and then only we will be having our food. Okay, in this age group particularly ये problem face होती है for all the parents and family as well कि they are interactive to the environment ज्यादा. Okay, घर पे कम रहते हैं because of the tuition, schools and everything, because of the schedule. वो बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर के environment में, बाहर के लोगों से मिलते हैं बहुत.
and they get easily influenced by them कि वो लोग तो खा रहे हैं, आप मुझे यही चीजें देते रहते हो, वो लोग तो पिज्जा खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, आप मुझे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? Okay, so they are more influenced by the other audience. So let's understand and make a very easy trick for the kids as well कि हमें खाना है तो क्यों खाना है और फ्यूचर के लिए खाना है. Okay, we don't want any diabetes, cholesterol in the future जो हम अभी देख रहे हैं सबको हो रहा है. Okay, we don't want that. We want to be healthy. We want to stay fit. Okay, slim, trim रहना है. So today's session will be basically focusing on how food will be linked to your growth and development plus your brain development, and the third part, how we can reduce the obesity rate which has been increasing. और September is a very good month और जो आज का session है that is also based and that is very important for today because September is celebrated as National Nutrition Day month, sorry. And we are very glad to announce that जो motto गवर्नमेंट से उन्होंने एक मोटो सेट करता है हर ईयर, तो इस ईयर का है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ. ओके, और ये मोटो हमारे साथ बहुत लिंक्ड है एंड फॉर दिस एज ग्रुप जो देखेंगे फ्यूचर को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर माय स्क्रीन. Hope it is visible to you. So healthy eating for the adventure of your kid. Okay, this is a quick introduction about myself. और हमें कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक फैंसी कुछ खाना नहीं है जो हमें ये करना है, वो मल्टीविटामिन ले लो या फिर ये न्यूट्रिएंट, ये पाउडर डाल दो, प्रोटीन मिल जाएगा. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये सिंपल रूल फॉलो करना है. दैट इज अ 5 फिंगर रूल. ओके, हम 5 भी करते हैं. हेलो. Okay, so I will start with the session. हम इसको बोलते हैं हाई फाई. Okay, every kid will understand better. ये हमारा हाई फाई रूल है और ये सब फॉलो करेंगे. Okay, and parents के लिए भी easy हो जाएगा whenever they are preparing food for their kids and they can make them understand कि हम इसमें से 5 में से क्या चीज ले रहे हैं and they can easily identify. First जो थंब है जो रूल करता है that is grains and cereals. उसके बिना हमारी लाइफ चलती ही नहीं है. They are called the energy giver. वो एनर्जी देता है हमारी बॉडी को टू प्रोसेस, हमें एक्टिव फील करवाता है. ओके, फ्रेश फील करवाता है. ग्रेन्स में क्या आता है? राइस है, रोटी है, ज्वार है, रागी है, ओट्स है, मिलेट्स है. सो दिस आर ऑल ग्रेन्स एंड सीरियल्स जो देते हैं एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं. Protein and milk. Kindly mute your mics and everyone can listen properly. Yeah. The second finger है protein and milk. उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डर. कोई बता सकता है प्रोटीन कहाँ से आता है हमारी डाइट में? प्रोटीन वाली चीजें क्या है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है जो हम डेली खाते ही है? पल्सेस. पनीर. मैम पनीर. चना. Okay. सोयाबीन. So soybean, great. Now we will be understanding protein क्यों चाहिए हमें. Okay, उसको बोला गया है बॉडी बिल्डर. वो मसल बनाता है. प्रोटीन बोलते हैं, सब लोग बोले प्रोटीन पाउडर लो, ये लो, बट हम एक्चुअली तो ले ही रहे हैं हमारी डाइट से. क्यों एडिशनल लेना है? ओके, जितना नेचुरल सोर्सेज से हम प्रोटीन लेते हैं बॉडी उतनी अच्छी रहती है. ओके, प्रोटीन क्या करता है? हमारे मसल को रिपेयर करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. ओके, जैसे कोई जो बच्चे हैं कोई दूध नहीं पीता है, उनको बोलते हैं मम्मी लोग कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप दूध नहीं पी रहे हो ना. बिकॉज ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो प्रोटीन वाला चीज नहीं ले रहा है और वो ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा उनका. द थर्ड है
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलता है प्रोटेक्टर। वो ऐसे शील पकड़ के खड़े हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन वाला चीज आया, दे विल हेल्प टू प्रोटेक्ट। ओके, और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, कलरिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, सब आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, बिकॉज दे विल हेल्प टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। वो आईज के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड प्लस फॉर योर हेल्थ। द फोर्थ वन इज हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स देखा, सब बोले कि फैट्स तो नहीं लेना है, मोटे हो जाएंगे, बट you have to take certain amount of fat which is healthy one, which is important for your hormones. Hormones को बनाने के लिए healthy fat चाहिए। Okay, so certain amount और moderate level में हमें healthy fat खाने चाहिए, because they are very smart nutrients. हम ज्यादा खाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, इसीलिए कम खाओ, इसीलिए स्मार्ट बने। ओके, एंड वो एग्जाम्पल्स हेल्दी फैट के क्या रहते हैं? आलमंड्स है, वॉलनट्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है। ओके, दिस ऑल आर हेल्दी फैट्स। एंड जो छोटी उंगली है, बहुत कम प्रोपोर्शन में खाओ शुगर। ओके, ट्राई करो कि अवॉइड ही कर सके, बट एज अ किड सबको क्रेविंग होती है। ओके, ट्राई करो कि उसके सब्स्टिट्यूट ले, जैसे डेट्स है, अंजीर है। ओके, उसके सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, तो फिर जो शुगर के जो हाई डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं फ्यूचर में, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। ऑल फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द किड्स, सबको यही टेंशन रहती है अभी क्या बनाए कल सुबह। ओके, हेल्दी भी खाना है, प्लस टाइम कम है, एंड व्हाट टू मेक एंड व्हाट इज हेल्दी वी एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस है, हमें 5 ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टू मेक इट मोर बैलेंस्ड एंड कंप्लीट। ओके, ब्रेकफास्ट में जैसे सब पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, पराठा है, डोसा है, चिल्ला है, ढोकला है। ओके, दैट आर इंक्लूडेड इन ग्रेन्स, ये ग्रेन्स में आते हैं। अभी उसके अंदर हमें प्रोटीन ऐड करना है, तो प्रोटीन में क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे स्प्राउट्स में आप सॉरी पोहा में आपने स्प्राउट्स डाल दिया, उपमा के अंदर सोया चंक्स डाल दिए, या फिर पनीर डाल दिया, पराठा के साथ दही ले लिया, इडली के साथ सांभर कंप्लीट कर दिया। द थर्ड फूड ग्रुप Excuse आते me, हैं ma'am. या Excuse me, ma'am. Can you please mute to everyone so that we can hear you properly? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Thank you so much, ma'am. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ दे देती हूँ कि हमें 5 फूड ग्रुप्स हर मील में लेने हैं टू मेक अ कंप्लीट बैलेंस मील फॉर अ पर्टिकुलर किड। आपके जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट मील देना है, तो हम एक एक मील को पकड़ के 5 फूड ग्रुप्स डालते हैं। कैसे? बहुत इजी है। ओके, पोहा ले रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन के लिए हम स्प्राउट्स डाल सकते हैं, सोया चंक्स डाल सकते हैं। पराठा दे रहे हो तो हम उसके साथ दही दे सकते हैं, इडली दे रहे हो तो सांभर दे सकते हैं। अभी जो थर्ड फूड ग्रुप डालना है, दैट आर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप कोई भी डाल दो, ओके, बट रेड, ऑरेंज और येलो, 3 कलर्स आर वेरी फेवरेट फॉर मी टू ऐड इन द ब्रेकफास्ट, बिकॉज वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज दे विल बी गोइंग टू द स्कूल आफ्टर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। ओके, रेड क्यों इंपॉर्टेंट है? रेड जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, दैट गिव्स यू विटामिन ए। ऑरेंज और येलो जो फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, आप जब ऐड करते हो अपने ब्रेकफास्ट में, विल गिव यू विटामिन सी। ओके, एंड गिव यू गुड स्किन एज वेल, रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है बॉडी में। ओके, एंड वेजिटेबल्स को अलग से नहीं खाना है, यू कैन चॉप इन योर पराठास। आप कैरेट का पराठा बना लीजिए, कैरेट रोटी बना दीजिए। ओके, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। और फ्रूट्स ऐड करना है तो यू कैन जस्ट चॉप इन द स्लाइस, आप उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर डाल सकते हो, जो बच्चे को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप उसको जो स्टिक्स आती है उसमें होल्ड करके उनको दे सकते हो, दे विल एंजॉय। ओके, अभी हेल्दी फैट कैसे इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट? यू कैन ऐड
तिल, you can add flax seeds in your रोटी पराठा, पोहा के अंदर तिल डाल दीजिए आप जब आप सेकते हो या फिर आप रोस्ट करते हो या फिर बनाने के वक्त. And the other healthy fat which we can include, that is walnuts and almonds. Okay. And sugar. Coming to the part of milk, बहुत सारी मम्मी को ये क्वेश्चन रहेगा कि दूध कितना पीना चाहिए for a kid. Okay, 2 cups is allowed for a kid. But बहुत सारे अभी केसेस देखे हैं हमने where kids are not able to tolerate. वो दूध को टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे जब भी दूध वाला कुछ भी लेते हैं तो डायरेक्ट ब्लॉटिंग हो जाती है, फिर लूज मोशन हो जाता है. ओके, सो मिल्क इज नॉट द कल्प्रिट, बट जो उसका प्रोडक्शन हुआ है, ओके, जो केमिकल डालते हैं या फिर जो हार्मोन्स डालते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, दैट इज गिविंग अ डिस्ट्रप्शन इन आवर हार्मोन्स. हमारी बॉडी को भी वो हार्मोन्स ट्रिगर कर रहे हैं एंड फ्यूचर में फिर पीसीओएस है, ये सब रिस्क बढ़ जाता है. ओके, टू रिड्यूस दैट रिस्क ट्राई करो आप जो भी दूध ले रहे हो, स्किम मिल्क हो, घर का डेयरी का हो तो बेस्ट है, या फिर आप दही यू कैन इंक्लूड फॉर द प्रोटीन्स. नट मिल्क्स आर इन द सीजन, जैसे आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ये सब भी आप दे सकते हो. ओके, एंड एवरीवन, मोस्ट ऑफ द किड्स आर फॉन्ड ऑफ बॉर्नविटा. दूध पिएंगे तो बॉर्नविटा के साथ पिएंगे. ओके, बट इट इज लोडेड विद शुगर. आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे पीछे जाके, इट्स हार्मिंग योर बॉडी इनडायरेक्टली. इट इज अ हिडन पॉइजन फॉर अस. ओके, और बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स है जो क्लेम किए गए हैं एंड इट इज इन द न्यूज एज वेल कि बॉर्नविटा इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द किड्स. ओके, सो व्हाट टू ऐड, बिकॉज वो अडेप्टेड हो गए, 6 to 12 इयर्स के बच्चे हैं, पहले से बॉर्नविटा पीते आए हैं, अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे उनको, एंड यू विल बी वरीड कि where would I get the calcium in other sources. Okay, so I will share you a good homemade Bonvita. Bonvita कैसे घर पे बना सकते हो, and that will be ऐसा है कि भाई ये तो कुछ करेगा नहीं, अपन को तो कुछ करना पड़ेगा. kindly mute. Actually I muted all. If you can just mute yourself. Okay, so homemade Bonvita, every parent can note it down. हम घर पे ही Bonvita बना सकते हैं and kids can enjoy. I will share you the recipe after the session as well. Okay, उसमें चाहिए हमें मखाना, oats, okay, dry fruits चाहिए हमें, कोको पाउडर चाहिए, डेट शुगर चाहिए या फिर जैगरी पाउडर भी चलेगा. ओके, आप मखाना ओट्स को ड्राई रोस्ट कर दीजिए, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को भी ड्राई रोस्ट कर दीजिए, मिक्सी कर लीजिए, कोको पाउडर डाल दीजिए एंड यू ऐड द डेट शुगर. आपका होममेड बॉर्नविटा रेडी, एंड यू कैन स्टोर इन द डब्बा एज वेल एंड यू कैन यूज फॉर मंथ्स एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू द लंच. लंच को कैसे हम बैलेंस्ड और कंप्लीट बनाएंगे. सीरियल्स में आते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, दलिया है या फिर रागी, जोवार, जो भी है, दैट इज काउंटेड इन सीरियल्स. सेकेंड करना है प्रोटीन. प्रोटीन जब सबने बोला कहाँ से मिलता है, दाल है, राजमा है, मूंग है, पल्सेस है, पनीर है, दही है, एंड इफ एनीवन इज हैविंग नॉन-वेज तो एग व्हाइट में से मिलता है, फिश है, चिकन है, you can get protein from there. The third food group you to complete in the lunch, that is fruits and vegetables. Vegetables में you can have lunch vegetables. Basically I would be preferring green vegetables and purple vegetables. बहुत हेल्दी होता है एंड वेरी रिच इन फाइबर. ओके, तो कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इट कैन आल्सो फाइट विद द इन्फेक्शंस एंड एवरीथिंग. कमिंग टू द पार्ट ऑफ हेल्दी फैट, हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इन द लंच. अब 2-3 ड्रॉप रोटी के ऊपर घी डाल सकते हो. अभी सबको ये फियर रहेगा घी खाएंगे मोटे हो जाएंगे. दिस इज अ वेरी रॉन्ग मिथ. ओके, घी इज वेरी हेल्दी, प्लस वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जॉइंट्स के लिए. ओके, एंड प्लस हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है घी. सो यू कैन अप्लाई इट. ओके, बट जब भी आप घी या कोई भी हेल्दी फैट यूज करते हो उसका एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन होता है, बस हमें उतना ही लेना चाहिए. उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो आगे जाके मोटापा है, will lead to more fat and everything. स्नैक का दिक्कत होता है फॉर एवरी पेरेंट. क्या दे बच्चे को, भूख लगी है, कुछ भी घर पे नहीं है. आई विल शेयर यू अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग.
आप एक जार लीजिए, अभी उसको सब 5 ग्रुप्स में हमें डालना है जार में, ओके। तो आप क्या डाल सकते हो, एक जार में आपको सीरियल्स डालने हैं, जैसे आप पोहा के चिवड़ा डाल दीजिए, या मुमरा है, मखाना है, या फिर ज्वारी, ज्वारी का पफ भी मिलता है, ज्वारी का भेल डाल दीजिए। अभी सेकंड फूड ग्रुप डालना है प्रोटीन्स, तो हम रोस्टेड चना दाल डाल देंगे या फिर रोस्टेड चना, ओके, यू कैन ऐड दैट। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, एक्चुअली फ्रेश फ्रूट्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड, बट कोई घर पे प्रिजर्व करता है या फिर ड्राई करता है तो वो फ्रूट्स भी चलेंगे इफ यू ऐड इन द जार। जैसे आपने कभी एप्पल डाल दिया, कीवी डाल दिया, ओके। एंड फैट के लिए पीनट्स इज अ वेरी गुड थिंग। एंड शुगर कभी डेट्स डाल सकते हो या फिर ब्लैक रीजन डाल सकते हो। तो ये जो अपना जार बन गया उसको बोलते हैं नटी ट्रेल मिक्स, ओके। ये स्नैकिंग के लिए, बच्चे के लिए सबसे हेल्दी है। पेरेंट्स को कोई दिक्कत ही नहीं, सब फूड ग्रुप्स आ गए हैं एंड दे कैन एंजॉय एज वेल एंड दे विल लाइक एज वेल। कमिंग पार्ट टू द डिनर, डिनर में हमेशा ध्यान रखो कि डिनर शुड बी लाइट देन योर लंच। हमेशा डिनर लाइट होना चाहिए। एंड डिनर में ही सब किड्स मांगते हैं मम्मी आज पिज्जा बनाओ, आज पास्ता बनाओ, ओके। सो हाउ वी कैन हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स क्या है उसके, जैसा खिचड़ी है तो यू कैन ऐड दही along with that, okay, with more vegetables added to that and make it coloring. Coloring बनाओ तो बच्चे को enjoy किया जाएगा and they will enjoy the taste as well. Pizza है तो you can make multi-grain pizzas. Millet pastas मिल रहे हैं, very good brands have been coming up. Surf Farm करके है, they are making a very good healthy millet pasta. Okay, जो मैदा से avoid, जो मैदा we don't have to, तो millet pasta they can try. For the breads as well, millet breads मिल रहा है, रैप्स बना सकते हो एंड उसके अंदर प्रोटीन के लिए हम लोग सोया चंक्स है या फिर हम छोले की टिक्की डाल दो, रैप बन गया अपना, वेजिटेबल्स ऐड कर दो, ओके। एंड मेजरली हम डिनर का जो वेजिटेबल है या फिर फ्रूट्स जो हम लोग ले सकते हैं फॉर द फाइबर्स, दैट आई कैन रिकमेंड हम व्हाइट ज्यादा प्रेफर करो, जो व्हाइट वाले कलर के रहते हैं, जैसे कि रेडिश है, कैबेज है, ओके, या फिर स्प्रिंग अनियंस है, जो ऊपर के स्प्रिंग अनियंस होता है, दे आर वेरी गुड, दे आर ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। जो पूरे दिन का कचरा खाया होता है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है फॉर द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, तो ये रिड्यूस करता है टू कट डाउन ऑल योर स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, द व्हाइट कलर। एंड फॉर द हेल्दी फैट, एज यू ऑल नो, वी कैन यूज घी ऑन द चपाती या फिर राइस पे 1 टीस्पून जितना डाल सकते हो। So this makes a complete balanced meal for the kids. Okay, 5 group and 5 simple rule, and this is called a high five rule. Okay, जो हम सब बच्चे लोग या फिर parents also can incorporate in their diet to make it complete. So this was from my side. Now we will be taking questions. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। विल सॉल्व ऑल द थिंग्स एंड विल टेक अ गुड क्वेश्चनर, और बच्चे लोग भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनको कुछ डाउट है या फिर दे आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर उनको ये स्टडीज में दिक्कत हो रही है एंड फूड इज नॉट गुड, तो वी कैन डिस्कस ओवर देयर, ओके। किसी के डाउट से लेट्स स्टार्ट। No. मैम जैसे मेरा किड 10 year old ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारे यहाँ पे घर पे जो बड़े पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि बच्चों को अब जैसे करेला वगैरह ये भी खिलाना स्टार्ट करो, बट यूजुअली वो बच्चे खाते नहीं हैं। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कुछ ऐसा जो बच्चे एंजॉय भी कर पाए, और या फिर किस एज में करेला खिलाना स्टार्ट करना चाहिए? अगर नहीं भी खिला रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट चल रहा है ऐसा कुछ? ओके, सी कमिंग टू द पार्ट, एक सब्जी नहीं खा रहे तो वी कैन हैव रेस्ट अदर 10 सब्जीज, ओके। सिर्फ करेला दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि हाउ यू प्रिपेयर इट। आप उसका अंदर से पानी निकाल दो, नमक डाल के यू स्टोर इट, और पानी निकालो तो उसकी जो बिटरनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट इफ योर किड इज ओनली नॉट हैविंग बीटर गॉड, मतलब करेला ही नहीं खा रहा है, बाकी 10 खा रहे, तो बाकी 10 दीजिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। मैंने जैसे बोला ना कि लंच में ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा दो, तो या फिर पालक दे दीजिए, या फिर परवल है, टिंडी है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स दिखते हैं वो दे दीजिए, दैट इज अ ग्रेट थिंग। वो फाइबर भी हो जाएगा एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी उनको सप्लाई हो जाएंगे।
मैम इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट फॉर द कर्ड, दही के लिए? Okay, so any problem with the things के वो tolerate नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है दही मैम का? टॉलरेट कर पा रहा है बट उसको शायद टेस्ट डेवलप नहीं हुआ स्टार्टिंग से ही इज नाउ 6.5 बट ही इज नॉट टेकिंग द कर्ड, बाकी सब वो खा लेता है। ओके, तो कर्ड का तो हम प्रिपरेशन ये कर सकते हैं कि आप मसाला या फिर उसको कोई रेसिपी में डाल दीजिए। ओके, जैसे आप उपमा बना रहे हो तो उसके अंदर दही डाल दीजिए तो प्रोबायोटिक भी उसको मिल जाएगा। या फिर आप जब रोटी बनाते हो या फिर कोई सब्जी बनाते हो, मैरिनेट करते हैं हम पनीर को, तो उसके अंदर दही आता है। तो दिस वे यू कैन गिव दही टू योर किड एंड ही विल एंजॉय इट। राइट मैम, थैंक यू। I have one question. So, for the fruits and vegetables, is it okay if we include the raw food with the cooked food? See, coming to the part of raw and हम सब साथ में नहीं ले सकते। If you are taking सब्जी, you can't take salad because वो bulk up हो जाएगा। Okay, for the kid. तो आप दोनों में से एक ही चीज दो, सब्जी दो या फिर सलाद दो। और फ्रूट्स तो हम लंच के टाइम पे इतना प्रेफर्ड नहीं करेंगे, लंच या फिर डिनर में। Okay, so you can only have fruits during the breakfast या फिर snacking time पे। That will be a substitute for this. तो आप हॉट और जो रॉ वाला जो डाउट है, आप सब्जी ले रहे हो नहीं तो फिर सलाद, दोनों में से एक ही चीज है। Okay. What about fruits for the breakfast if we give some cereals or something like that? I mean, the milk even. So, can it go together like milk and fruits? Yeah, to some extent, but what fruits which you are picking, that is also important. Like the simplest form, which is an alkaline fruits which we consider, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के साथ हम लोग पेयर या फिर हम लोग एप्पल, ये सब फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बट विटामिन सी वाले फ्रूट्स हम मिल्क के साथ नहीं कर सकते कंबाइन, जैसे ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, which can't be combined with milk. So if you are giving a fruit or a cereal bowl, you can give apple, pear, which is a good substitute if you want to add bowl. Okay. Yeah, thank you. I have a question. How to, is it recommended to get the food tolerance report at the age of 9? Okay, good question. And coming to the part of tolerance, looking at the symptoms, we have to suggest. Okay, if a kid is not facing a lot of problem with the digestion, he's not able to tolerate a particular, then a kid can go ahead with a tolerance test if by the doctor's advice, of course. But randomly, normal individual को कोई जरूरत नहीं है to go ahead with this particular test. But if a client or a kid is not able to tolerate, काफी टाइम से parent is noticing कि जैसे ही वो दूध वाला कोई product ले रहा है and he is going to washroom immediately, so these are the minor signs which a parent has to pick up and have to go to the doctor and get the treatment done. Because हर time kid is not tolerant, okay, allergic भी होता है, tolerance gut का inflammation की वजह से भी हो रहा है, so we have to find the cause and then we have to heal accordingly. एक्सक्यूज मी Because मैम, if- जूस पी yeah, सकते हैं because if- फ्रूट्स का? रॉ फ्रूट्स खाते हैं नहीं है बच्चे? Okay, नहीं खाते हैं फ्रूट्स, उसका जो कंपोजिशन है वो बदल जाएगा एंड वो ज्यादा शुगर वाला बन जाएगा। ओके, जैसे हम एक एप्पल खाते हैं, एक एप्पल का तो आप जूस नहीं बनाओगे, ओके, और वो कैलोरीज ऐड करता जाएगा। आपको एटलीस्ट 2 फ्रूट्स तो चाहिए होंगे टू मेक अ जूस, ओके, और फिर वो कैलोरीज बढ़ता जाएगा एंड प्लस जब आप फ्रूट्स को ग्राइंड करते हो, मिक्सी करते हो, उसमें से फाइबर चला जाता है और जो मिलता है वो सिर्फ शुगर मिलता है। ओके, सो ट्राई टू हैव फाइबर, फाइबर के लिए हम वो फ्रूट्स खाते हैं। ओके, तो फाइबर जितना मिले तो आप उसको प्रिपरेशन में चेंज कर दीजिए, उसके ऊपर चाट मसाला डाल दीजिए। पान दो क्या जा? Should be avoided. What is the limit of sugar intake per day?
Okay, so it is 4 teaspoon for sugar is allowed for a kid. जो recommendation है by the Indian Institute of Nutrition, 4 teaspoon हम allowed करते हैं. A kid can have 4 teaspoon of sugar. Okay, it's like added sugars or sugar. Added sugar, जो white sugar होता है, Mm. that you can have 4 teaspoon. बाकी जो natural sources से आते हैं, which are hidden, we can't count that. वो count नहीं होता है. जैसे dates है, अंजीर है, fruits में से मिलता है sugar. That is not counted in the recommendation. But if your kid is having sugar in form of white sugar, jaggery, कुछ भी honey है, this is recommended to 4 teaspoon. Okay, even if it is honey, it is equal to white sugar. I mean, the Yes, mixed because sugar. body के जाके same reaction करेगा. भले उसका source अलग है, it is not coming from the same sources, but when it goes to our body, it is broken down into glucose only. So दोनों का action body को नहीं पता है कि आपने honey खाया है या sugar खाया है. Body में जाके it will only understand and identify as a glucose और वो blood sugar बढ़ाता ही है. Excuse me, ma'am. Yeah. How can we make homemade Bonvita? Okay, I will share the recipe with you. A quick brief I will give you कि उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं मखाना है, ओट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, कोको पाउडर है एंड डेट शुगर है या फिर जैगरी पाउडर यू कैन यूज इट. आपको ड्राई रोस्ट करना है. आई विल शेयर द रेसिपी विथ यू. ग्राइंड करना है ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऐड द रॉ इंग्रेडिएंट्स जैसे कोको है, डेट शुगर है, आपको सब मिक्स करना है एंड यू कैन स्टोर इन द simple. You can also make it. I will share the recipe after the session. Excuse me, ma'am. Hello. Yeah. Ma'am, I have a question. Prisha, she do not eat any vegetable. Okay. So what should we do for this? Okay. See, now coming to the part कि nutrition चाहिए from the vegetables. Okay. अभी यहाँ पे family का role play करना है and plus the उसका जो environment है, क्यों नहीं खा रहा. Okay, we have to understand कि उसको क्यों पसंद नहीं आ रहा है. Maybe उसका जो taste bud है, वो develop ही नहीं हुआ है. रोटी खा रहा है, तो उसका taste bud develop हुआ है to have you रोटी. या फिर आप उसने देखा है कि आप खाते हो रोटी, मम्मी खाती है रोटी, सब्जी खाते हुए शायद उसने नहीं देखा है. तो sit with her. Okay, sit with your child. Understand कि ये क्यों नहीं खा रहा है. शायद ये preparation से उसको पसंद नहीं आ रहा है. Change the preparation. और हर and one more thing for all the parents, do one thing. I will be sharing you one sheet as well. Okay, that will be a 5 rule sheet जहाँ पे you have to tick mark कि अपने बच्चे ने क्या क्या लिया है उस दिन and reward your kid. ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है एंड डेली 1 मंथ में आप ये प्रोग्रेस देखोगे फॉर योर किड एज वेल कि वहां पे टिक नहीं करती है ना फॉर द वेजिटेबल्स उसने नहीं लिए हैं, उसके रिवॉर्ड्स ऑलरेडी कम हो रहे. नाउ शी विल ओनली स्टार्ट आस्किंग कि आई वांट टू इंक्रीज दिस रिवॉर्ड. अभी मैं क्या करूं, ये वेजिटेबल्स को मम्मी हम लोग ये सूप के फॉर्म में ले लें या पराठा में आप ऐड कर दो तो आई कैन इंक्रीज माय रिवॉर्ड. दिस आर द स्मॉल थिंग्स वेयर अ पेरेंट कैन प्ले अ मेजर रोल. ओके, हम बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते, उसको पसंद ही नहीं है, नहीं खिलाएंगे, उसमें क्या है. ओके, बट ये न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए. तो दिस वे वी कैन इनकॉर्पोरेट. सिट विथ योर किड्स, एंजॉय द प्रोसेस एंड मेक हर आल्सो गो इन द किचन. और आपकी किड के साथ किचन में जाओ, उसको बताओ कि इस तरीके से चॉप किया जाता है. इट विल बी अ गेम फॉर हर एंड शी कैन ईट दैट वे. सो वी कैन प्ले विद द किड एंड make them eat the vegetables which she is not having. તો બેન આપણે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં શું લઈ શકીએ? આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં શું લઈ શકીએ દૂધ સાથે? ओके, सो ब्रेकफास्ट में हम लोग ले सकते हैं जैसे कि मैंने 5 रूल बताया. ओके, 5 फिंगर्स होने चाहिए. इफ यू आर हैविंग पराठा, I have some paneer along with that जो प्रोटीन कंबाइन कर ले. इट्स कंबाइनिंग विद दैट एंड बहुत सारे लाइक मिथ्स है या फिर हमारी सोसाइटी में बोलते हैं
कुछ भी सॉल्ट वाला चीज नहीं लेता है। ओके, तो अभी 1 कप हमने ले लिया। ओके, नाउ उसके साथ हमें ब्रेकफास्ट टू फुलफिल अदर फूड ग्रुप्स कैसे करेंगे? तो you can keep a gap of 15 minutes, okay, where you can enjoy the milk as well and fulfill the other food groups as well. So you can have some poha along with some sprouts added to that. Okay, have one fruit, which will be a good thing for having a fiber substitute. તો આપણે દૂધ સાથે શું લઈ શકીએ? You can have parathas, you can have poha, you can have upma, okay, along with some protein added to that, and you can have some fruits as well. या फिर आप वेजिटेबल्स भी अंदर डाल सकते हो पोहा के अंदर, उपमा के अंदर, तो हमारे जो भी 5 फूड ग्रुप्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। થેન્ક યુ બેન. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Yeah. Actually, my kid is 6 years old. She's always telling like morning breakfast she'll not eat much. Why? Because no time will be there for school and all. And after that, from last few months, she's telling I'm having stomach pain. That gas problem. When we went to doctor, that the gastric problem is there. So, do you need any change in diet and all to give? Morning and then school also she's not eating properly. Okay, got it. Yes, a consideration and a personalized diet should be recommended for her. Okay, because उनका पूरा दिन का शेड्यूल देखना पड़ेगा, how is the sleep routine, water intake, okay, ये सब देखा जाएगा, and then only a particular suggestion would be given to her कि क्यों हो रहा है, और stomach pain के बाद कौन से part में हो रहा है, why she is facing that, gas किसकी वजह से हो रहा है, we have to understand her पूरा routine and everything, and then only we will be giving her the diet, particular diet to her. No, if that problem, gastritis problem is because of that morning she's not eating properly. That breakfast, mostly she's skipping. Only one idli, half idli, one dosa, like that only she's eating. So mostly, is it because of that? We don't know what is the main problem for her. Will it नहीं, I happens? completely understand your point. हाँ, maybe because of the light breakfast she is having, okay, उसकी वजह से वो acid build up हो रहा है, because body requires, okay, और वो secrete करेगा, and आप उसका नहीं दे रहे हो तो फिर वो acidity, gas है, वो सब में combine करेगा. Plus उसका water intake भी कितना है, if it is very less, that can also trigger her gas, acidity, and आप किस तरीके से बना रहे हो, the preparation also matters. जैसे हम सुबह बहुत दिनों वाला fermented food है, वो तुरंत आपने खा लिया, which is acidic to her, तो फिर वो आगे जाके उसको gut issues में convert होगा. So we have to understand her overall routine, क्या क्या खा रही है, कौन से time पे, we have to understand it personally. Okay, thank you. Hello. Yeah, I have a question. તો દીદી આપણને મને ભાજીનું શાક નથી ભાવતું, તો હું બીજું શું ખાઈ શકું? So you can add, the question was कि उसको सब्जी पसंद नहीं है, the पालक है या फिर green leafy vegetables, not enjoying that, you can just steam it, you can boil it, you can add in your rotis, okay, that will be a good way, and plus you can add other green vegetables which you like. A particular food, if you are not enjoying, you are not liking, you can substitute with other green leafy vegetables which you enjoy. થેન્ક યુ દીદી. I have a question for a 13-year-old boy. If he is having continuous pain in his legs, so what diet should we follow for bone development? Okay, so both the legs have been paining. Yeah, after some physical activity, not much, but then also he is always complaining about pain in legs. Okay, so first thing we can What are check the with calcium-rich food maybe? Sorry, So what are the calcium-rich foods maybe for bone? calcium. Yeah, I'm coming to that part. First thing, go with the blood checkup. Okay, if the iron levels are very low for your kid,
You can go ahead with that. Multivitamin will be a great source. क्या जो भी B12 है, D3 है, वो सप्लाई हो जाएगा, लेग पेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. And coming to the part of calcium-rich foods, usually calcium is derived from the non-veg sources, but there are natural sources as well. जैसे आप दूध ले सकते हो, जैसे मैंने बोला 2 cups is recommended for the kids. 2 cups, okay, not 2 glasses, 2 cups are recommended. प्लस कैल्शियम के लिए हम लोग तिल डाल सकते हो. तिल हम 1 चम्मच तिल डालते हैं. इट्स द सब्स्टिट्यूट ऑफ 2 कप मिल्क. ओके, आप 1 चम्मच तिल ले लो. ओके, वो उसमें जितना कैल्शियम होता है 2 कप मिल्क में मिलता है, उतना कैल्शियम हमें 1 स्पून में मिलता है. ओके, सो यू कैन यूज तिल. आप रोटी के अंदर डाल दीजिए, सब्जी के अंदर डाल सकते हो तिल. दैट विल बी अ ग्रेट सोर्स फॉर द कैल्शियम फॉर योर किड. And what is the ideal time for breakfast, lunch, and dinner? और the ideal time, as I mentioned, कि complete balance कोई भी मील करना है, 5 जो हमें सिंपल रूल फॉलो करना है, 5 फिंगर वाला. एक काम होना चाहिए, कोई भी ग्रेन्स है, सीरियल्स है, प्रोटीन है, वेजिटेबल्स डाल सकते हो, एंड प्लस कोई भी हेल्दी जैसे घी डाल दिया, या फिर कोई भी तिल है, फ्लेक्स सीड्स है. ओके, यू कैन यूज दैट. शुगर दैट इज एन सब्स्टिट्यूट, बट ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए जब भी आप एक प्रॉपर लंच प्लेट या फिर डिनर प्लेट देख रहे हो तो फॉर अ किड. One more thing, that he is many times overeating. Means if he likes the food, he does overeating. So what we can do to avoid it? A very good thing. और यही मोटो से the government has started a obesity management का scheme. Okay, kids ज्यादा क्यों खा रहे हो? Because they are वो growing stage में है. Okay, उनको खाना चाहिए because body requirement है, plus उनका transition होगा. Okay, to the childhood, to the adolescent puberty hit होगा, तो requirement बढ़ेगा, and kids या फिर boys ज्यादातर बहुत ज्यादा proportion में खाते हैं. Okay, that is because of the hormones plus their development. Okay, तो हम यहाँ पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में ले रहा है, तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट टू वन थिंग कि आप जो कार्ब वाला चीज है ना, जो ग्रेन्स है, जैसे रोटी है या फिर चावल है, वो आप सेम क्वांटिटी में लीजिए. ओके, बट जो सब्जी है एंड द प्रोटीन पार्ट है, जैसे प्रोटीन में दाल है, पल्सेस है, पनीर है, दही है, तो ये पोर्शन आप बढ़ा लीजिए. तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, क्रेविंग भी नहीं होगा, एंड जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसको सप्लाई हो जाएगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड आपको लगेगा भी नहीं कि ये बहुत ओवर ईट कर रहा है. सो दिस वे वी कैन वर्क आउट विद द प्लेट मैनेजमेंट. And is it okay to have paneer every 2-3 days for protein requirement? It is fine, okay, but try to have home-based paneer only. Bahar ka paneer will be added with lot of fats, and we don't know how is the preparation. So you can use homemade paneer, that is best, and you can have it 2 to 3 times in a week. That is a fine amount which you can. What are अगर the other आपने options स्कूल apart from paneer, soya chunks, paneer, and tofu? What are other options for protein requirement? प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट्स ऑल टाइप ऑफ दाल्स है, यू कैन ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस है, एंड इफ यू आर नॉन वेज यू कैन हैव एग व्हाइट्स, यू कैन हैव चिकन, फिश. ओके, यू कैन हैव अभी जो एडेमामा भी आता है. ओके, इट्स नॉट यूजुअली यूज्ड इन इंडिया, बट उसके स्नैक्स बहुत ज्यादा अच्छे से मिल रहा है, रोस्टेड एडेमामा. दैट इज आल्सो अ हाई प्रोटीन. प्लस वेजिटेबल देखते हैं हाई प्रोटीन, तो पीस इज अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स व्हिच यू कैन हैव फॉर द in the meal. તો આપણે રોજ સ્કૂલ હોય તો આપણે બ્રેકફાસ્ટ માં શું ખાઈ શકીએ? એકદમ લાઈટ. See, breakfast mein you can have milk along with some fruits or maybe nuts. That will be a great thing which you can have daily in the breakfast. Okay, thank you. Any other questions any kid want to ask? If they are feeling very lethargic,
बहुत थक जाते हैं स्कूल के बाद आने से, ऐसा कोई भी किड, आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स लाइक दैट? Yes, one more thing. What हाँ, should be the water intake? What should be the water intake for the kid? A kid can have 2 liters of water. जैसे हम मार्क रख सकते हैं कि स्कूल से पहले 1 लीटर आपको कंप्लीट करना है जो बॉटल दी गई है. So these are the little milestones which a child can achieve. 2 liters are recommended for the kids. And is it okay to have a Glucon-D or Vital Z along when he comes back from school from sun? Okay, why to give artificial things? Let's give a home-based thing. You can have lemon water. Okay, you can give lemon water. You can give shikanji. Okay, you can have chia seed water. You can have beetroot water. Beetroot post any of the physical activity या फिर बहुत थक जाते हैं, give a beetroot water. जैसे बीटरूट वाटर कैसे बना सकते हैं, एक ग्लास में आप बीटरूट बहुत लाइक 3 to 4 स्लाइसेस डाल दीजिए बीटरूट के, एंड दैट यू कैन गिव टू योर किड. उसके अंदर नाइट्रेट कंपाउंड रहता है बीटरूट के अंदर, दैट इज वेरी गुड फॉर योर एनर्जी लेवल टू स्पाइक अप. ओके, यू कैन गिव दिस सब्स्टिट्यूट. उससे अच्छा है कि आप ग्लूकोन डी और ये सब दे रहे हो, दैट इज बेसिकली शुगर ओनली. और आप एक स्कूप जब ग्लूकोन डी एक ग्लास में डालते हो, आपका ऑलरेडी 4 टीस्पून तो कंप्लीट वहां पे ही हो जाता है, प्लस एडिशनली जो हम कैलोरीज ले रहे हो दूसरे जो सोर्सेज से, फिर वो बल्क अप कैलोरीज में इंक्लूड हो जाता है. ओके, सो ट्राई टू गिव द नेचुरल वन एंड द हेल्दी वन. So we have to boil the beetroot or put pieces into No, water. you don't have to boil beetroot. You have to add the beetroot in a raw form. और आप 15-20 मिनट पहले भी आप उसको प्रिपेयर करके रख सकते हो, और जब बच्चा आता है यू कैन स्ट्रेन दैट वाटर एंड यू कैन गिव दैट beetroot water to them. Oh, thank you. તો દીદી હું સ્કૂલ થી આવીને બહુ થાકી જાઉં છું, તો मैं કઈ જ્યુસ કે લીંબુ શરબત એવું કઈ પી શકું ડાયરેક્ટ You can આવીને? have this water, that will be a great thing, will be a healthy thing, and you can increase your energy with beetroot water. ઓકે, થેન્ક યુ. લીંબુ શરબત પી શકે ને પણ? Lemon water without sugar you can have it. ઓકે. So we are also there is a kids community as well with Always Live Yoga. So you can all join with there. Okay, where you can get all the activities, you can perform different activities. We will be assigning different tasks to your kids as well, and that way we can engage more kids, and that will also pivot to having a healthy eating habits to the kids. So you parents can also join to the community group, and we will be having a lot of interactive sessions, interactive activities along with that. And also, if any particular, see, this were the in general suggestions which were given to a parent for a kid. Okay, if you want to have a specialized nutrition plan for your kid as per his activity, as per his weight, as per his concern, you can always connect with us. Okay, I will be always happy to serve you all and help you over the because हर घर का अलग अलग खाना रहता है. There is no one particular food के यही बनता है. Okay, and there is no particular requirement कि ये इस group को इतना ही देना चाहिए. It always varies on the activity level, plus उन आपका lifestyle कैसा है, plus आपका eating habit कैसा है. It will always vary. Okay, so if you are asked, like if you want a kid to have a healthy routine, you can always go for this plan. Any other doubts besides this? Hope you have enjoyed this session, and it was interactive and it was knowledgeable for kids as well. Hope kids also enjoyed. Please answer, kids. You enjoyed?
Yes. Yes, ma'am. Great. So can everyone Yes, tell Shweta me didi. what all things are important for a meal? हमें क्या क्या important चीज है जो आप अभी incorporate करना start कर दोगे कल से? So that Didi. this is important for us. Okay, so let's Ma- go ahead. ma- If any doubts, will end with this session. कोई भी parents Didi. को ऐसा कोई भी questions है तो they can just Didi. drop us. Okay, and I will also share you with the Bonvita recipe and one activity sheet with the kids, which you can enjoy it, and that will be a thing for the parents as well to keep a note on how the child is responding to a particular food and eating healthy. Okay, we are ending today. Hi, And ma'am. if you have any doubts, you can just ping us. Okay. Didi. Hello. 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 Yes. You told some millet pasta and millet noodles. That company brand name, right? What is that? Surf Farm. It is endorsed by Anushka Sharma, and it is also a good brand. And there are different other brands as well for the millet pasta. If you are searching, you can search on Amazon. But Surf Farm is a recommended brand which you can take. Okay. Can you spell it? I didn't understand. SLURT Farm. Okay. 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 Thank you. દીદી તમારા આપણને ફેટ હોય તો આપણે શું લઈ શકીએ? ફેટ્સ હોય તો શું ખાઈ શકીએ? કઈ ડાયટ કે For હોય કોઈ આપણને? walnuts, almonds, you can eat. ઓકે. મને છે ને તે ભીંડાનું શાક બહુ ભાવે છે. તો એને વધારે ખાઉં છું તો એ ચાલશે કે કેમ? એટલે હું ભીંડા જ્યારે મારી Good મધર out. Sing. So now we are coming to the end of the session. Okay, hope it was a very helpful session for you and for your kids as well. And lastly, I want to say, let's start eating healthy for our better life. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.